वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है in association with Neeraj Publications, publishing the largest range of chapter-wise reference books, including many solved sample question papers for various IGNOU courses. Now, let's start studying the assignment for the subject code MPSE-3, Western Political Thought. Answer any 5 questions in about 500 words each. Attempt at least 2 questions from each section. Each section carries 20 marks. So these are the instructions given. Overall 5 questions को attempt करना है और minimum number of questions जो हर section से attempt होने चाहिए that is 2. हर question का weightage है 20 marks. Let's start discussing section 1. Question number 1. How is political thought distinguished from the political theory and political philosophy? Explain. लेट्स डिस्कस द आंसर। पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो ये एक जनरल थॉट होती है जो कंप्राइज करती है थ्योरीज को और वैल्यूज को ऑफ द पर्सन और अ सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी जो सोचते हैं और लिखते हैं डे टू डे एक्टिविटीज पर, पॉलिसीज पर और स्टेट के डिसीजंस पर। पॉलिटिकल थॉट एक बेस्ट टर्म है जो एनकम्पास करती है ऑल सब्जेक्ट मैटर को विद इन द डिसिप्लिन दो रीजंस की वजह से। थॉट एक जनरल टर्म है जो अप्रोप्रिएटली एनकम्पास करती है एंटायर सब्जेक्ट मैटर को और यूज ऑफ पॉलिटिकल थॉट होल डिसिप्लिन में मेक करता है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी को एज स्पेसिफिक सब कैटेगरीज। थॉट थ्योरीज एंड वैल्यूज जो मोटिवेट करती हैं पॉलिसी और पॉलिटिकल बिहेवियर को इंक्लूड करती हैं ऐसी थ्योरीज जिससे लोग अटेम्प्ट करते हैं टू एक्सप्लेन ईच अदर्स पॉलिटिकल बिहेवियर और वैल्यूज जिससे वो जज कर पाते हैं द मैकेनिज्म सच अ लॉ वेयर बाय कंट्रोल इट एंड पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल थ्योरी को यूज किया जाता है इंटरचेंजेबली बाकी टर्म्स के साथ जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी और आइडियोलॉजी काफी सिमिलर है और समटाइम्स इंटरचेंजेबली भी यूज करी जाती हैं, लेकिन इन्हें डिस्टिंग्विश किया जाता है एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंसेस। Focusing upon political processes and institutional political theory डील करता है बेस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर के साथ फॉर एन आइडियल ह्यूमन लाइफ एक कम्युनिटी में फ्रॉम पॉलिटिकल एथिकल क्राइटेरिया जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ट्राई करती है जनरलाइजेशन बनाने में अबाउट द लॉज अबाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस डिफर करती है इन टर्म्स ऑफ देयर बाउंड्रीज एंड स्कोप, लेकिन उनका कुछ एम रहता है को जैसे कॉन्सेप्ट आइडियाज और थ्योरीज डेवलप की गई पॉलिटिकल थ्योरी द्वारा इज यूज्ड बाय पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड मैन एक मेन पॉलिटिकल बीइंग एक्स्ट्राक्लिबली लिंक्ड है परस्यू ऑफ सर्टेन गोल्स, मॉरल्स और ट्रूथ्स के साथ। Moving on to the next question, discuss St. Thomas Aquinas' understanding of the relation between the church and the state. Let's discuss the answer. Aquinas ने डिफाइन किया स्टेट को एज ऑथर एंड एग्जीक्यूटर ऑफ द ह्यूमन लॉ, जिन्होंने चार्ज किया पनिशेबल ऑफ वाइस एंड एनकरेजमेंट ऑफ वर्च्यू को। द चर्च ही हेल्ड इज एन इंटरप्रिटेटर ऑफ डिवाइन लॉ थ्रू नेचुरल लॉ ऑफ विच ह्यूमन लॉ इज द इंफीरियर पार्ट। हेंस एक्विनास के लिए चर्च प्रॉपरली एडवाइस करता है स्टेट को ऑन मेनी मैटर्स स्पेशली दोज रिलेटिंग टू मॉरल लेजिस्लेशन। ऑल पावर अकॉर्डिंग टू एक्विनास भगवान से आती हैं सिंस ये इन्वॉल्व करता है पावर ऑफ लाइफ और डेथ को इन विच चर्च डॉक्ट्रिन इज द prerogative of God. Here Aquinas deviates from Aristotle. दिस यूनिटी ऑफ पर्पस आती है इन सिटीजन जिनका एक एंड रहा बट सेपरेट स्पिरिचुअल और मटेरियल नीड्स रही। द सिटीजन्स रिलेशनशिप स्टेट के साथ काफी हॉलिस्टिक रहे। ही इज सबऑर्डिनेट टू द स्टेट एज अ पार्ट टू इट्स होल द मेंबर्स ऑफ द बॉडी, लेकिन ये देता नहीं है स्टेट को अनलिमिटेड पावर अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर। एक चीज के लिए इसको हमेशा परमिसिबल रहा जाएगा टू ओबे अ लॉ विच इज कॉन्ट्ररी टू द डिवाइन लॉ। Moving on to the next question. Comment on the following statement of J.S. Mill. Is it better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied? Let's discuss the answer. Mill's famous formulation of utilitarianism को नोन किया गया एज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल को। ये होल्ड करता है दैट वन मस्ट ऑलवेज एक्ट सो एज टू प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल विद रीजन। मिल्स के मेजर कंट्रीब्यूशन रहे अपने आर्ग्यूमेंट में फॉर द क्वालिटेटिव सेपरेशन ऑफ प्लेजर।
This is perhaps in direct contact with Benjamin's statement that pushpin is as good as poetry, that if some simple child game as hopscotch causes more pleasure to more people than a night at the opera house. मिल ने डील किया with one of the prime problems जो utilitarianism के साथ associated रही. Detractors of utilitarianism argued among the things that if enough people hated another people sufficiently that simply reducing the happiness of the object of their hatred उन्हें pleasure cause करेगा. It would be incumbent upon a utilitarian society to aid them in harming the individual. The quantitative account of happiness that Milk advocates thus sheds light on his account presented in On Liberty. Moving on to section 2. Write a short note on each part of the following questions in about 250 words. Part A. Immanuel Kant's transcendental idealist view of human nature. Let's discuss the answer. ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म एक डॉक्ट्रिन है जो फाउंड की गई बाय जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट इन 18th सेंचुरी. कांट की डॉक्ट्रिन मेंटेन करते हैं दैट ह्यूमन एक्सपीरियंस चीजों का काफी सिमिलर रहता है जैसे कि वो दिखाई देते हैं, जो कि इंप्लाई करता है फंडामेंटली सब्जेक्ट बेस्ड कंपोनेंट को रादर दैन बीइंग एन एक्टिविटी जो डायरेक्ट करती है, कॉम्प्रिहेंड करती है चीजों को एज दे आर एंड ऑफ देमसेल्व्स. Despite influencing the course of subsequent German philosophy dogmatically, exact how to interpret the concept was a subject of some debate amongst 20th century philosophers. Perhaps the best way to approach transcendental idealism by looking at Kant's account of how we intrude objects, the task करता है demand को at looking as it accounts space and of time. कांट से पहले कुछ थिंकर्स जैसे कि लिबनिज ने डिसाइड किया दैट स्पेस एंड टाइम दोनों चीजें नहीं हैं बट ओनली द रिलेशन अमंग थिंग्स. अदर थिंकर्स जिन्होंने इंक्लूड किया न्यूटन ने मेंटेन किया स्पेस एंड टाइम को दैट दे वर द रियल थिंग्स ऑफ सब्सटेंसेस. According to his mono ideology, all things जो human ordinarily understand करते हैं interactions के तरीके से between individuals और बाकी चीजें that humans originally understand करते हैं as relation among individuals. In view of the realist, individual things interact करती हैं physical connection और relation among things के साथ. Kant has to be satisfied with examining the functions of the mind and teasing out of the functional dependencies without much, if any, help being derived from observable physical mechanisms in the brain. Mind oppose करता है structures को on incoming data पर. In the case of rope perceived to be a snake, the initial structuring must be abandoned. Moving on to the next part, Alexis de Tocqueville on religion. Tocqueville ने ऑब्जर्व किया मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रिलीजन प्ले इन द अमेरिकन सोसाइटी. इसके साथ साथ द डिफाइनिंग ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स जिन्होंने सेपरेट किया ब्रिटिश कल्चर को अमेरिकन कल्चर से. टॉकविल ने फाउंड किया दैट द रोल ऑफ रिलीजन इन दीज सोसाइटीज काफी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है. उन्होंने जाना कि बहुत सारे डिफरेंसेस रहे अमेरिकन और इंग्लिश स्टेम्स में फ्रॉम द डाइवर्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड फ्रीडम्स. थ्रूआउट हिज करियर टॉकविल ने प्रमोट किया इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन फ्रीडम को और एजुकेशन को विदाउट रिलीजियस इन्फ्लुएंस. उन्होंने प्लेस करी इंपॉर्टेंस को ऑन एजुकेशन इनोवेशन जिससे स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम लीड हुआ. इन सब ने एट्रीब्यूट किया पीसफुली डोमिनेशन ऑफ रिलीजन को अपनी कंट्री में मेनली टू द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट. Despotism may govern without faith, but liberty cannot. Religion काफी ज़्यादा necessary है than the republic, than in the monarchy. It is more needed in democratic republics than in any others. Here the burden of argument is that एक revolution necessarily create नहीं किया जाता एक acute misery की condition, suffering, injustice और oppression के साथ. It may also go on to the extent that affluent and happy people may think of revolution क्योंकि उनकी expectations ज़्यादा रही. इसके पीछे रीजन था that people जिनके heart are enthusiastic by making more and more advancement in some direction ने क्रिएट किया रेवोल्यूशन को जब उन्होंने पाया कि सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस एक ऑब्स्टिकल है उनके रास्ते में. Moving on to the next question, Pluto's methodology. Let's discuss the answer. Pluto born हुआ एथेंस में in c 4 to 7 BCE. मिड 20s तक एथेंस इन्वॉल्व रहे लॉन्ग डिजास्ट्रस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में स्पार्टा के साथ which is known as Peloponnesian War.
Coming from a distinguished family on his father's side descending from Codrus, एक early kings of Athens was on the mother's side from Solon. Plato came to the conclusion that all existing government बुरे थे and almost beyond redemption. Human race का कोई respite नहीं रहेगा evil से unless those who really philosophers acquire political power on until some divine dispensation who ruled and have political authority in the city become real philosophers. हाईएस्ट मेथड ऑफ फिलोसोफाइजिंग ने डिस्कस किया मिडिल पीरियड डायलॉग्स को जिसे डायलैक्टिक कहा जाता है ये कभी भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं हो पाया द करेक्ट मेथड फॉर डूइंग फिलोसफी वी आर नाउ टोल्ड इन द लेटर वर्क इज व्हाट प्लाटो आइडेंटिफाई करते हैं एज कलेक्शन एंड डिविजन जो रेफर करता है फ्रोडिस को इस मेथड में फिलोसोफर कलेक्ट करते हैं सारे इंस्टांसेस को ऑफ सम जेनेरिक कैटेगरी जिनका कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहा और फिर डिवाइड हुआ इनटू स्पेसिफिक काइंड्स कि उन्हें फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता Moving on to the next part, Hegel's theory of state. Let's discuss the answer. Hegel's theory of state कुछ words रहे on a theory and practice problem of the modern state. इस practice में philosophy of right Hegel काफी clear है that his science of the state articulate करती है nature of state को not as it is thought to be but as really is कि वो actually कैसा है जो कि something है inherently rational. Hegel's के famous quote इस regard में what is rational and actual is what is actual and rational करस्पॉन्ड करता है रैशनल कॉन्सेप्ट और दस कुछ सेंस में परफेक्ट है लेटर इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ स्टेट आइडिया के इंट्रोडक्शन में हेगल इज एट पेन्स टू डिस्टिंग्विश द आइडिया ऑफ स्टेट फ्रॉम अ स्टेट अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इट हिस्टोरिकल ओरिजिन और कहते हैं कि जब स्टेट एक तरीका है ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड वी मस्ट नॉट फोकस हमें सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस पे ही फोकस नहीं करना चाहिए लेकिन फोकस करना चाहिए सिर्फ आइडिया पर फर्दरमोर वो कहते हैं कि स्टेट इज नो आइडियल वर्क ऑफ आर्ट ये स्टैंड करता है अर्थ पर सो इन द स्फीयर ऑफ कैप्रिस चांस एंड एरर बैड बिहेवियर में डिसफिगर इन मेनी रेस्पेक्ट्स बट द अगलीस्ट ऑफ men अ क्रिमिनल और इनवैलिड और अ cripple ऑलवेज एक लिविंग मैन रहता है Our ability to rationally distill from existing state their ideal characteristic does not entail that fully actualized state does or will exist. Hence, एक कुछ ambiguity रही Hegel's के claim में about the modern state as an actualization of the freedom. इस assignment and essay और IGNOU solved assignments को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignowala.com अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 प्लस 15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.